We will just start up now. Mute করে মিট করে দিন। Okay, guys, we'll just start up now. Just give me 2 minutes. Let me, meanwhile, open the presentation, all of you all. তারপরে আনমিউট করছি। Participants 19. Okay, guys, welcome back, everyone. So we'll start up the session now. So first and foremost, yes, welcome back, and good to see all of you all again today. And let's take up the session with a new interactive, with new topic, जहाँ पे we keep learning and keep sharing our knowledge with all of you all. So before we start, yes, last week. I think we couldn't take up the session since 2 weeks because I was a little busy with my workshops, and since again last week again the same way.
we missed up. So this week we'll take something new and interactive as well. Okay. तो पहले हम लोगों ने लास्ट सेशन में वेबिनार में कैन एनीबडी टेल व्हाट डिड वी डिस्कस? Yes. 7-year-old male seizure case. Caesar case, right? 17 years boy. 7. Yeah, 17. Okay. My voice is low. Is it for everyone or for one or two? Is it for everyone? Is my voice low or audible to everyone? No, sir, it's audible. It's audible, right? Okay, huh. So yes, tell me. So Caesar case, right? So okay, it's audible. Fine. So it was a Caesar case. So what did we do last class? So what did we understood in the in the Caesar case? Can anybody tell? Yes. What did we do in the last class? So we understood about what did we see in the EEG, right? We have understood from the EEG some of the reports, and we understood about the spikes. Once we understood about the spikes, and then we went across about the marking of the points on that case. So again, I will not tell, I will not take a complete history again, because we need to today take with the new case. In general, we what did we do? What were the points being taken that day? Can anybody tell? What were the points being taken? कौन से points हम लोगों ने लिया था? एक आके we took over the Cover all lobe brain. yeah, all the lobes of the brain. Very good. Next, we'll go with the step by step. First step was being ignored. Second step, what did we do? In the second step, we have taken pineal gland and adrenal gland. Remember, because the patient was also in the phobia, fear. To overcome with all those things, we had taken with the adrenal gland. Correct. So after taking with the adrenal gland, next, what did we take? Cervical 1, 2, 3. Cervical. Yes, cervical 1, 2, 3. Correct. Cervical 1, 2, 3 we have taken. Then next, what did we take? Point. Then we have taken with the then we have taken with the sunna points, with the yafu, Yapu. zawaba, Zaba. kamadua, nukratul kafa, abdain, and up to kahil. We have taken all the sunna points. Correct. And what else? Those are always the points. What was the line of treatment we have understood in the last class? Wet cupping, Yes. dry cupping, and then fire cupping. Fire cupping. Okay. And also I've told to take over the Inhalation. paraspinal cupping as well, so that so that we can see the improvement of the patient. Correct. So let's understand from, I think, Ruqya. Ruqya, are you there? Because this was your patient's case, right? Ruqya, I think she is not attending today. I don't see her name as well in the list. Okay. So what we can do is No, sir, she is not there. not there. Okay, fine. Chalo. So we'll take up a new case, which I have brought a new case for all of y'all. So let's understand with one case which I'm sharing right now for all of y'all. So is it, are you able to see the picture? Yes. दिखाई दे रहा है ये वाला? Are you able to see the Yes, sir. Yes, sir. picture, right? Okay. चलो हम लोग इस पे समझते हैं, ठीक है? तो कोई बता सकता है कि क्या बता रहा है यहाँ पे? बेकर्स सिस्ट है ना? तो यहाँ पे क्या बता रहा है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट अस अंडरस्टैंड. See, everyone has to join together again and again. We admitting it makes lot of difficult, okay, and disturbance during the class. Okay, तो पहले समझते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे डायग्नोसिस में क्या है? बेकर सिस्ट है. करेक्ट. बेकर सिस्ट शोइंग इन द लेफ्ट नी. ओके, और एक्सरे नी का भी बता रहा है. और अर्ली ओए मतलब क्या है? ऑस्टियो आर्थराइटिस. ठीक है. तो अब पहले समझते हैं हम लोग बेकर सिस्ट क्या है. कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज बेकर सिस्ट?
This is my one of my patient's case which I'm trying to share it with all of you all. Yes, go ahead. And we see very effective results in just 2 to 3 sessions. Okay, that's the reason I want to share this case with all of you all. Yes, go ahead guys. आप बताएं मेरे को कि बेकर सिस्ट क्या होता है in general. Assist in popliteal fossa. Yeah, it usually occurs in the back of the knee near the popliteal fossa. इसमें क्या होता है? अच्छा ठीक है, मैं उर्दू में भी बात करूंगा. ये बेकर सिस्ट होता है. बेकर सिस्ट क्या होता है? ये घांट जैसी होती है जहाँ पे फिल्ड विथ फ्लूइड होता है. ठीक है, ये पानी जैसा कभी भरा हुआ होता है जहाँ पे नी के पीछे में पाया जाता है और वहाँ पे बिल्कुल पेशेंट को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है. पॉप्लेटल फोसा यानी नी के पीछे में जो आता है पॉप्लेटल फोसा, वहाँ पे उसी एरिया के आसपास ये पाया जाता है और ये फील्ड होता है, एक फ्लूइड जैसा फील्ड होता है वहाँ पे, जिस वजह से पेशेंट को नी में पेन होता है, घुटनों में दर्द होती है, नी पेन्स होता है, इमोबिलिटी हो जाती है, stiffness हो जाता है and excessive pain during the night time. Okay, so all these things usually are the cases. And also one of the causative factor is also obesity and long standing. ठीक है, so let's understand one by one. तो एक one by one हम लोग समझते हैं. कोई बता सकता है इसके causative factors क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेटिव फैक्टर मतलब इसकी कारण कारण क्या हो सकती है? बेकर सिस्ट की कारण ही समझते हैं पहले हम लोग, है ना? तो एनीबडी टेल मी व्हाट इज द कॉजेटिव फैक्टर ऑफ बेकर सिस्ट इन जनरल किस वजह से आ सकता है? किस वजह से बेकर सिस्ट होता है नी पे? पहले उसको तो समझना जरूरी है ना. यस, गो अहेड गाइस. अब मैंने आपको बता ही दिया है कि वहां पे फील्ड एक फ्लूइड सैक जैसा बन जाता है. कहाँ पे? नी के पीछे में. तो अब ये आप लोग बताएं ये क्यों होता है, किस कारण होता है? Excess production of lubricating fluid. लुब्रिकेटिंग फ्लूइड एक्सेस प्रोडक्शन तो होता है, बट क्यों हो रहा है? लुब्रिकेटिंग फ्लूइड क्यों हो रहा है? Arthritis. Correct. Arthritis. One of the causative factor is arthritis. Second, long standing. Third, Obesity. obesity. Yes, good. Fourth, go ahead. Keep apply your minds. और किन किन वजह से हो सकता है? और किन किन वजह से हो सकता है? यस, ओबेसिटी हो सकता है. यस, गुड. नेक्स्ट. यस, Uric acid. I didn't understand. I didn't get you. Can you please Long tell me? standing posture. Long standing. Yes, of course. Next, दूसरा, लंबे समय में खड़ने की वजह से भी हो सकता है. और कुछ, और कुछ Injury, sir. इंजरी की वजह से भी हो सकती है. और दूसरा, और दूसरा बॉडी में ये भी पाया गया है, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर हुआ है कि एक्सेसिव हमारे बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट्स और विटामिन B12 ज्यादा होने के कारण भी फ्लूइड्स भर सकते हैं. ये वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर भी है. समझ में आ रहा है? तो और दूसरा कुछ, और दूसरा Due to inflammation. इन्फ्लेमेशन. यस ऑफ कोर्स, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है. यस ऑफ कोर्स, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन बहुत सारे मार लगने की वजह से या कुछ क्या इंजरी होने के कारण, इन्फ्लेमेशन होने के कारण भी फ्लूइड्स भर सकते हैं. तो बहुत सारे कारण हैं. ठीक है ना, ये हम लोगों ने कॉजेटिव फैक्टर समझा. मैं अभी आप लोगों को डायरेक्टली हम लोग केस में नहीं जाएंगे. इस केस को समझने के लिए हम लोग अभी पहले हम लोगों ने कॉज समझा किस वजह से होती है. ठीक है ना, अभी हम लोग ये समझेंगे इसकी पैथोजेनेसिस. हाँ, यस ऑफ कोर्स, यूरिक एसिड भी हो सकता है. यस ऑफ कोर्स, हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग ओनली बिकॉज ऑफ दैट. हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि we are just talking because of the fluid fills. Fluid filling can happen due to many factors, है ना. So we all have to overrule during when we are asking the patient to understand the underlying cause. सबसे बहुत बड़ी चीज क्या होती है? अंडरलाइन कॉज को समझना बहुत जरूरी होता है. ओके, अब आ जाइए. CA मे बी वन ऑफ द थिंग, बट
No, again, Baker cyst, again, दूसरे चीजें हैं, not like nodes what you are talking, or not like the cases what you are thinking in that way. Baker cyst, many major of the cases may not turn to CA. समझ में आ रहा है ना? तो yes, इसके अलावा, so these are the causative factor. अब हम लोग समझते हैं pathogenesis. So let's understand पैथोजेनेसिस। इसकी पैथोजेनेसिस बीमारी कैसी बनती है? कैन एनीबॉडी टेल इसकी बीमारी कैसी बनती है? यस, इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है? बेकर सिस्ट कैसे बनते हैं? हमने समझा कॉज, किस वजह से हम लोगों ने समझा है, करेक्ट, किस वजह से बनती है? इमोबिलिटी हो सकता है, बट अगेन आई एम आस्किंग यू फ्रॉम द पैथोजेंस। पैथोजेंस यानी बीमारी पैदा कैसी हुई? आई एम आस्किंग यू फ्रॉम द डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू। बात समझने की कोशिश कीजिए। हमने अभी जनरली समझा, क्योंकि मैंने आपको बताया हो कि फ्लूइड फिल्ड हुआ है, वहां पे फ्लूइड फिल्ड होने के कारण हम लोगों ने समझा है, करेक्ट ना? बट बीमारी कैसे पैदा हुई है उसको भी तो समझना बहुत जरूरी है ना। हम लोग, प्रॉब्लम इज व्हाट वी आर विथ ऑल ऑफ द थेरेपिस्ट हो जाए, डॉक्टर्स हो जाए, वी रश विद द फाइनल आउटकम ऑफ द डिजीज। नो आउटकम, आउटकम से पहले बीमारी पैदा हुई, पैथोजेनेसिस कैसी हुई, उसके साइन सिम्टम्स बहुत जरूरी है। जब तक ये सारे चीजें नहीं समझेंगे, देन मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट एवरी डिजीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके कॉजेटिव, मतलब किस कारण, किस वजह से हुआ है, और बीमारी कैसे बनी हुई है, इसको समझना, बिगिनिंग ऑफ द डिजीज उसको समझना जरूरी है। Go ahead. I want, see, this is an interactive, okay? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक तरफ मैं ही बात करूं। I want interaction, जिसको समझ में आए तभी जाकर नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज शेयरिंग होती है। तो पैथोजेनेसिस को लेट्स अंडरस्टैंड, ये पैथोजेनेसिस कैसी होती है? यस, बेकर, Sir, as you said, it could be the calcium deposition. In some cases, body cannot able to, what can I say, ड्रेन calcium. ड्रेन दैट आउट, हाँ Yeah. ठीक है। So that calcium depositions happen. That could be Okay. the. So let's understand a case. Now this case, for example, okay, yes, I told osteoarthritis or meniscus tear is also the fluid accumulation, inflammation, which that's what we spoken. Okay. Now let's understand this case, a female which is a 56 years old. Okay. So now since the female is 56 years old, okay, due to long standing and no proper immobility, having a history of varicose veins and also osteoarthritis, okay, the fluids are being seen filled in the back of the knee, which is formed like a cyst. That is majorly due to no proper drainage of those lymphatics, क्योंकि फ्लूइड्स कहाँ कहाँ पे होता है, लिम्फैटिक्स में होता है ना। तो no proper drainage in the lymphatic, which has caused a nodule like structure like a cyst, okay, causing the knee to become immobile, hence causing a Baker cyst. समझ में आ रहा है? ये आपका पैथोजेनेसिस हुआ है। ये हम लोगों ने इस पेशेंट की पैथोजेनेसिस समझी है। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? अब ये पेशेंट का क्या हो गया, पैथोजेनेसिस कहां से हुआ? बिकॉज ऑफ दो चीजों से। एक कहां से हुआ, एक आके हम लोगों ने समझा, एक आके मेजरली बिकॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड आल्सो ओबेसिटी एंड लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हुआ है, जिस वजह से वहां पे बेकर सिस्ट हुआ है। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? now let's go with the next structure, next stage. Okay, next stage we will understand what is the signs and symptoms. अब सब लोग साइन एंड सिम्टम्स पे चलो हम लोग बात करते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हुए होंगे या क्या हो सकता है? यस इन Pain, जनरल, पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, stiffness, इन्फ्लेमेशन रहेगा,
स्टिफनेस रहेगा, ओके, पुलिंग सेंसेशन रहेगा, ओके, एंड इमोबिलिटी रहेगा। तो ये सारे के सारे चीजें क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स होंगे, करेक्ट ना। अब नाउ सिंस वी अंडरस्टूड अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स, अब इसके लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, कोई बता सकता है? इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? यस, अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? Rupture of the cyst. रप्चर ऑफ दिस मेनिस्कस, यस ऑफ कोर्स हो सकता है, सिस्ट रप्चर हो सकता है वहां पे। अगर अगर सही से सिस्ट अगर सही से उसको ड्रेन आउट नहीं करेंगे तो क्या होगा, रप्चर होगा। अनएबल टू वॉक इज समथिंग साइन एंड सिम्टम, नॉट द कॉम्प्लिकेशंस। हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, अगर सही से ट्रीट नहीं किया गया तो कॉम्प्लिकेशन से क्या हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, ऑफ कोर्स नो प्रॉपर ड्रेनेज होने की वजह से स्वेलिंग एडिमा हो सकता है, एफ्यूशंस हो सकते हैं वहां पे। तो ये सारा मेजर कॉम्प्लिकेशंस जहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब ट्रीटमेंट के तौर पे आ जाइए, तो इसमें कोई बता सकता है इस पे ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं हम लोग इन जनरल? इन जनरल बात करेंगे, फिर हम लोग कपिंग पे आएंगे, ठीक है ना। बोलिए, बोलिए अभी इन जनरल क्या क्या कर Drainage. सकते हैं हम लोग? Antibiotic. एंटीबायोटिक देते हैं, ऑफ कोर्स, ओके। दूसरा क्या, ड्रेनेज के लिए हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन देते हैं। दूसरा क्या देंगे, दूसरा क्या देंगे? if it is due to fluids, then टेंडॉन्स, drainage के लिए टेंडॉन्स देंगे. वगैरह के लिए, ताकत के लिए देंगे, कुछ स्ट्रेंथनिंग के लिए देंगे, टेंडॉन्स के लिए मेडिकेशन देंगे, कैल्शियम देंगे, ऐसा कुछ जो भी है, मल्टीविटामिन देंगे, मल्टी और दूसरा कैल्शियम क्या, कोलिकैल्सिफेरॉल्स देंगे। तो ये सारे कुछ जहाँ जनरल मेडिकेशन जहाँ पे देते हैं, ठीक है ना। और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एनएसएआईडी ड्रग्स देते हैं, ठीक है, ताकि इन्फ्लेमेशन को कम कर सके। और दूसरा, अर्थराइटिस अगर है तो अगेन अंडरलाइन समझना पड़ेगा अर्थराइटिस किस वजह से था और किस वजह से आया हुआ है। देन अगेन अगर अंडरलाइन कॉज उसका अर्थराइटिस है तो अगेन वी हैव टू गो अहेड एंड ट्रीट अर्थराइटिस। अगेन ओए है तो ओए के लिए हम लोगों को बिल्कुल गो अहेड एंड ट्रीट दी ओए। ओए का मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ठीक है ना। अब ये हो गया मेडिकेशंस। अब ट्रीटमेंट्स में, अब थेरेपेटिकल वाइज हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? थेरेपेटिकल वाइज क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग? needle cupping, नीडल कपिंग, ओके, कपिंग कर सकते हैं, ओके। दूसरा और क्या कर सकते हैं हम लोग? हम्म, यस, और क्या कर सकते हैं हम लोग? कपिंग एक हो गया, ठीक है। दूसरा, दूसरा एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। तीसरा फिजियोथेरेपिस्ट Boxa, कर, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं हम लोग। और Boxa दूसरा treatment, sir. मुख्य ट्रीटमेंट वो कपिंग में आ गया ना। तो कपिंग में क्यों आप ये बोल रहे, मैं आपको पूछ रहा हूँ कौन से थेरेपीज कर पाएंगे आप? ओके, सो फर्स्ट हो गया हमारा, क्या क्या हो गए, एक आके कपिंग, कपिंग हो गया। दूसरा आके हमारा हो गया फिजियोथेरेपी हो गया, physiotherapy, acupuncture हो गया, एंड अगेन नेक्स्ट आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स हो गए। देन अगेन आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स में अगेन यू कैन टॉक अबाउट इवन अबाउट द सिस्ट है तो ऑफ कोर्स वी कैन टॉक अबाउट यू नो बस, नो नॉट बस्ती, नो बस्ती, बस्ती नहीं, इसमें हम लोगों को बस्ती वी कैन डू इट, बट अगेन we need some immediate results, we can do it leech therapy in this, okay. Leech therapy can be one of the line of treatment, can be taken up into it, ओके। सो ये सारे के सारे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द कपिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कपिंग में हम लोग इसको कैसे मैनेज करते हैं। क्लियर, समझ में आया? बीमारी के बारे में समझ में आया सबको, कैसी होती है वगैरह, ये सारा कुछ समझ में आया? एनी डाउट्स, एनी डाउट्स विद दिस? ओके, सो पहले हम लोग वन बाय वन विल गो अहेड एंड सी। ओके, नाउ point making, okay. So let's understand this case with
ये वाला आके बेकर सिस्ट. Okay, so let's go with the पहला वाला. ठीक है, so go ahead guys. So first one, what will you suggest? First step में क्या suggest करेंगे आप लोग? Yes, Wet cupping. वेट कपिंग नहीं, पहले हम लोग स्टेप बनाएंगे ना. पहले डायग्नोसिस क्या था हमारा? डायग्नोसिस क्या है? इंक्रीज्ड है. Increased. इंक्रीज्ड क्यों हम लोग बता रहे हैं? accumulation of the fluids behind the knee, creating a cyst like structure or causing Baker cyst is increased. So treatment हम लोग क्या करेंगे? Treatment we will do is drainage method. Understanding everyone? Understanding, that's the reason we do drainage method. अगर आप लोगों को पुराने लोग अगर confuse हो रहे हैं what is drainage method, so I will explain, but again that again you need to keep doing revision, you will come to know. But in short, we'll do drainage method. Clear? So now then again next go to the first step. First step में क्या होगा? यहाँ पे first step में क्या होगा? Affected area. Okay, we can go ahead with the Point system. affected area. So only affected area can be taken because we do not know the area and the size and the surrounding area. So it may be usually 2 to 3 point treatment system. Okay, so that's the reason we are putting here affected area. तो चलो हम लोग first हो गया affected area. Second guys, यहाँ पे क्या हो सकता है? सेकेंड कौन सी ग्लैंड ले सकते हैं हम लोग? कौन सी ग्लैंड लेंगे हम लोग? पीनियल ग्लैंड लेंगे हम लोग. और कौन सा लेंगे? पैराथायरॉइड लेंगे हम लोग. और कौन सा लेंगे? यस, और कौन सी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे? यस, नहीं, इतना ही काफी है एक्चुअली. मैं पूछ रहा था आप लोगों को, कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था. बट you need to understand, okay, why we are taking parathyroid. I will be asking you, I'm just putting up the points now. Okay, now liver we will take, and then we will take spleen in. Okay, अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ. तो अगर हम लोगों का नी है तो अगेन 4 स्टेप, देन एल और 3 के पास. Then again, let's go to the final one. Then again, we will go with the final one, which is fork. Then again, what should be the Sunna points then? Apart from fork, Al-Fuqwal Rukba. Fawqur, Rukba. Okay. Then Fawqur, Rukba, and what else? General Kadam. Zahra al-Qadam. Warikain, Zahar al-Qadam. Okay. ठीक है, ये सारा पॉइंट्स आप हम लोग कर सकते हैं. ठीक है ना? पॉइंट्स में कुछ डाउट्स हैं किसी को? पॉइंट्स में कुछ डाउट्स हैं किसी को? क्लियर विद एवरीवन? पॉइंट्स क्लियर है सब लोगों को? ओके फाइन. सो लेट्स गो विद वन बाय वन. ठीक है, सो आई विल जस्ट मेक सम पॉइंट्स फॉर यू. तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप अफेक्टेड एरिया, करेक्ट. तो अभी हम लोग अफेक्टेड एरिया पे जाएंगे. यहाँ पे लेफ्ट था, तो अगर हम लोगों का यहाँ पे है, इस एरिया में एक स्टेप हुआ, दो हुआ, सराउंडिंग कर रहे हैं ना हम लोग. ओके, तीन अफेक्टेड एरिया पे कर रहे हैं. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया हमारा? सेकेंड स्टेप, सॉरी फर्स्ट स्टेप है ना.
तो अब आ जाइए हम लोग सेकेंड स्टेप पे हम लोग काम करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोगों का पीनियल यहाँ पे हो गया। ओके, नेक्स्ट पैराथायरॉइड। ओके, पैराथायरॉइड ओवरलैपिंग विद अगदैन, ठीक है। अब तो तीसरा थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में क्या होगा? 0 पॉइंट। थर्ड स्टेप ऑर्गन पे जा रहे हैं अभी हम। Organ. लिवर, kidney. किडनी, लीवर हो गया, ओके, एंड देन किडनी पे आ जाए आप लोग। ओके, और स्प्लीन एक रहा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। एंड ऑल्सो यू कैन टेक हार्ट ऑल्सो, वन ऑफ द नाउ। अगर स्टेंट है तो वेंट्रली नहीं लगाओगे, डॉर्सली लगाओगे स्टेंट है तो। ओके, तो ये वाला हो गया, ठीक है। एंड व्हाट एल्स? एंड व्हाट एल्स? एंड देन नाउ वी गो टू द सुन्ना पॉइंट्स, करेक्ट। अब सुन्ना पॉइंट्स पे जाएंगे हम लोग। ओके, सुन्ना पॉइंट्स या फूक, या फूक हो गया। देन अगेन alvaricane. So do you know guys, there's an update for you all, ठीक है। I'll share in the next week or the other week with regards to the some upgradation in the points in Sunna points and some uh, uh, क्या some क्या spelling errors, okay। So उसके बारे में मैं I'm just telling you just earlier what was this name? Earlier it was Surinia pushed, right? Earlier. So now Al Warikane and what do you say? Al Warikane or Surinia pushed are the synonyms of each other. Okay, that mean to say that Al Warikane bhi wahi hai or Surinia push bhi wahi hai. So there is no other point saying that there is a Al Warikane. Earlier in the earlier books and other places, the Al Warikane was showing here. Okay, Al Warikane was showing here, so that was incorrect. Okay, so now we have changed Al Warikane and Surinia push to be the same points. Clear? That's the reason if you see we are putting Al Warikane here itself. Okay, so I'm putting here Warikane. You can see here Warikane is here itself. Okay, clear with that, guys? So ऐसा है, and then हम लोग एक काम करेंगे। एंड ऑल्सो देयर इज अ स्मॉल करेक्शन इन फौको अल रुक, earlier it was fawqu al rukba, okay, now it is fawqur rukba. You understand? There is just small al and ur making lot of differences. So now we will put, where is fawqur rukba? Where is fawqur rukba? Which is above the on the knees, knees. above the knees, above the knees, okay, above the knees, ठीक है ना। ओके, फौकुर रुकबा, क्लियर। एंड देन उसके बाद में जरल कदम, जरल कदम कहाँ पे है? या जरल कदम, all are same point. There was only one upgradation which is about the Surin Yapush and Alvarike. Okay, ये वाला आकर हमारा वो अलवारिकेन और सुरीन यापुश बोथ सेम, ठीक है। एंड व्हाट एल्स?
Vertebral level. Vertebral level we have to take, which is L2 and 3, correct? L2 हो गया, L3, L2 and L3, okay? So this is L2 and L3. So now, along with this, because of the Baker cyst, also the patient had pain in the patella, okay, in the kneecap also. So what we can do here is we can also surround the knee with the pin, since okay, it was in the left, right? So what we can do, one, okay, okay. So these are the points which we can select and do the marking for the Baker cyst. अब आ जाइए हम लोग, let's understand about the line of treatment. Clear with this? ये points सबके लिए clear हैं? कुछ doubts हैं किसी के लिए? Anyone have any doubts on this? Sir, affected area, can we apply the cups on the cyst or near the cyst? Over the cyst. Over the cyst. Okay, sir. Yeah, we are doing it above the cyst, over the cyst. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. अब आ जाइए हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है ना? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, the line of treatment what we can do, पहला आ जाइए. So first line of treatment क्या हो सकता है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में? हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला 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 सिलेक्शन क्या होगा ट्रीटमेंट का? Yes, of course, wet cupping can be one of the point of or one of the line of treatment for selection. ठीक है. Okay, second, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? ड्राई कपिंग में क्या कर सकते हैं हम लोग? नेक्स्ट ट्रीटमेंट Massage cupping, fire cupping. मसाज नहीं, हम लोग सीक्वेंस से आना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ड्रेनेज टेक्निक कर रहे हैं. ड्रेनेज टेक्निक कर रहे हैं तो हम लोगों को पहले स्ट्रॉन्ग कपिंग होना पड़ेगा. तो बी में क्या होगा? बी में अगर क्योंकि सिस्ट है, सिस्ट के ऊपर मसाज इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है? सो इट इज ऑलवेज गो अहेड विद द इट इज ऑन नीडल कपिंग. ओके, हाँ, यस. नेक्स्ट सी, what we can do here? Yes, anyone? What we can do here, which is called fire cupping at the last. Okay, flash cupping in the last. Okay, but understand this is the treatment for only management. Okay, but not for the root cause. Understand my point? Treatment selection of the line of treatment हमेशा ये याद रखना चाहिए कि क्या हम लोग इसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देना चाह रहे हैं या उसको हम लोगों को रूट कॉज ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं. ये जो भी कुछ हम लोगों ने अभी सेलेक्ट किया है ये आके सिम्टोमेटिक अप्रोच है. अब आ जाइए रूट कॉज अप्रोच पे. रूट कॉज अप्रोच पे अभी हम बताते हैं, उस हिसाब से आप लोग कीजिए. आई एम श्योर यू विल गेट गुड रिजल्ट. ओके, यहाँ पे मीडियम कपिंग स्टार्ट करो. ओके, देन उसके बाद में देन स्टार्ट अप विद द मोक्सा कपिंग. ओके, सी देन स्टार्ट अप विद हर्बल कपिंग. ओके, देन डी स्टार्ट अप विद finally end up with flash cupping. This root cause helps in eradicating your Baker cyst. Because the root cause is the major approach जहाँ पे आपकी breakdown of no MFR and all here. No MFR because this is not for myofascial. This is a cyst problem. So there is ruled out of any kind of MFR. Okay. MFR usually happens if any kind of musculoskeletal disorder has been involved. यहाँ पे musculoskeletal का issue नहीं है, यहाँ पे cyst है जहाँ पे lymphatics involved है. Lymphatics involved है and some part of the venous issue, circulatory issue involved है. So always जहाँ पे भी अगर हम लोग cyst को हम लोग
हम लोगों ने ड्रेनेज मेथडोलॉजी इसलिए सेलेक्ट किया ताकि वहां पे थोड़ा बहुत ड्रेनेज हेल्प हो जाए। जैसे हेल्प हो जाए ड्रेनेज, तो हम लोग रूट कॉज पे जाके सर्कुलेशन को लाना है। सर्कुलेशन को लाने के लिए रूट कॉज इज द बेस्ट अप्रोच। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो जब तक हम लोग रूट कॉज ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, फर्स्ट या 2 या 3 ट्रीटमेंट के बाद, you will not see good result in Baker's cyst. You understand? So this patient which I'm talking, this patient was been done the same treatment what I'm talking to you, which approximate 4 to 5 sessions. Now we see that there is a very drastic change and approximate 90% result in the Baker's cyst. Now there is no cyst, she had very minimal, invasive over there, very minimal invasive से हम लोगों ने treatment किया है। पहला आकर वेट कपिंग किया, वेट कपिंग करने के बाद में उनको ड्राई कपिंग 2 से 3 सेशन जो भी ड्रेनेज टेक्निक है किया था, और 2 सेशन सिर्फ हमने रूट कॉज ट्रीटमेंट किया था। इन दिस वी सी वेरी गुड इफेक्टिव रिजल्ट्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम मूवमेंट्स, और वहां पे मिनिमली वी सी मे बी 2 to 5% ऑफ द सिस्ट रिमेन, बाकी का 90-95% देयर इज नो सिस्ट। मोबिलिटी अच्छी आ गई है, स्टिफनेस कम हो गया, पेन नहीं है, and patient is very satisfied and happy just with the perfect line of treatment। देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सिलेक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। नो डाउट कपिंग गिव्स वेरी इफेक्टिव रिजल्ट्स, एवरीथिंग यू कैन नॉट चैलेंज सेइंग दैट ओके only with the help of wet cupping you can do anything। No doubt wet cupping is a very supreme treatment, but that is not only the treatment। Along with the wet cupping process, okay, you also need to employ the other methodologies। अगर ये करेंगे तो I'm sure you will get very effective results and you can manage any kind of disease, but you should know when to do how। That is why we all are here for learning process, correct? तो जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ समझ में आएगा, जो भी कुछ हमारे एक्सपर्टीज से हम बता सकें, we will surely share you the knowledge in this। But again, line of treatment should be correct, and unless and until line of treatment is not correct, you will not see good results। You understand my point? So this is how we can do it। And now also अब आ जाइए, तो हर्बल कपिंग, तो आ जाइए मीडियम कपिंग कितने पुल्स होना चाहिए? 2 pulls। मीडियम कपिंग कितने पुल? 2 पुल्स। गुड। 2 पुल्स कितने मिनट तक होना चाहिए? ड्यूरेशन कितने मिनट होना चाहिए? ड्यूरेशन 2 पुल्स 10 minutes. 10 to 15 मिनिमम minutes। 10 to 15 15 मिनट, minutes. मिनिमम 15 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स। मिनिमम ही As होना चाहिए 15 मिनट, मैक्सिमम होना चाहिए 30 मिनट। उसको कहते हैं मीडियम कपिंग। ओके। स्ट्रॉन्ग कपिंग कितना मिनट होना चाहिए? 5 minutes। 5 minutes. मिनिमम 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। Minutes. 3 to 5 minutes. 3 to 5 मिनट, इसलिए वही बोल रहा हूँ, मिनिमम शुड बी 3 मिनट्स, मैक्सिमम शुड बी 5 मिनट्स। मीडियम में कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए 15 मिनट, मैक्सिमम होना चाहिए 30 मिनट्स। ओके। हाँ, अब आ जाइए मोक्सा कपिंग। मोक्सा कपिंग is something a very ready-made thing which we get, because the reason behind doing moxa cupping is heat pathogenesis हमारे बॉडी में जब सिस्ट में जब एक्सपोज होगा तो क्या होगा वहां पे? हेल्प इन द ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, दैट्स द रीजन मोक्सा कपिंग इज रियली गुड। हर्बल कपिंग कोई बता सकता है कौन से ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं ये लिम्फेटिक्स के लिए? any hot herbs। एनी हॉट हर्ब एग्जांपल बताइए ना, क्योंकि हम लोग यहाँ लर्निंग में है। ओनली हॉट। Ginger। Ginger we can take। ओके, जिंजर। ओके, दूसरा कर्क्यूमिन ले सकते हैं। ओके, और तुलसी। दूसरा? और दूसरा? पेपर। ओके ओके, पेपर ले सकते हैं। और दूसरा? तुलसी Herbal ले सकते containing हैं। maximum percentage of magnesium. मैग्नीशियम ले सकते हैं, जैसा कि
जैसा कि यस गो अहेड King. यस क्या बोला आपने गो अहेड गाइस Epsom salt. Epsom salt. Kind of you can use it, but not only the treatment for that. Can be taken, can be taken. But again, do you know how a herbal cupping is made? Sir, Do we you can take tulsi because it's rich in magnesium. we can take tulsi, having anti-inflammatory property also. We can take that one, but again, yes, of course, someone is told, okay, tulsi is good, but again, I would suggest you can take giloy. You know what's giloy? Guduchi, you know what's guduchi? गुड़ची हैव यू नो इट्स अ क्रीपर आप बहुत सारे घर के बाहर देखे होंगे क्रीपर जैसा एक आया आया होगा घर के बाहर क्रीप यानी घर के बाहर वगैरह बहुत सारा ऐसे घर को यानी कवर करता है पूरा ऊपर ऊपर जाते हुए है ना तो यू नो गुड़ची गुड़ची इज वेरी गुड इन दिस केस गुड़ची बहुत सारे यू नो आप लोगों को मैं चाहे तो बाद में भेजता हूँ उसका हर्ब का पिक्चर यूजुअली यू विल गेट दैट गुड़ची का अच्छे से उसको लो उसको अच्छे से उसका पूरा का उसको पंचांग इस्तेमाल करो उसको लेके उसके लीव्स लेके उसको क्या करो उसको अच्छा काढ़ा बनाइए पहले अब उसको काढ़ा बनाने के बाद में क्या करोगे उसको काढ़ा बनाने के बाद में अच्छा उसको लूप वार्म बनाना है इतना उसको काढ़ा बनाना है जहाँ पे भी आपने यू नो 1/4 तक उसको क्या करना है उसका पानी ड्रेन होना है और बस 1/4 ही रह जाए 1/4 रहने के बाद में उसको क्या करो दो तरीके हैं हर्बल कपिंग के एक आके विद द हेल्प ऑफ बैम्बू एंड विद द हेल्प ऑफ ओनली यूजिंग काढ़ा अब विद द हेल्प ऑफ बैम्बू कैसा करें ड्यूरिंग जब भी ये बॉईल हो रहा है डिकॉक्शन बना रहे हैं आप लोग बैम्बू को क्या करो बैम्बू को ड्यूरिंग द बॉइलिंग प्रोसेस आप बैम्बू को उसके अंदर डाल दो एंड बैम्बू व्हाट विल हैपन बैम्बू विल आल्सो बॉईल अलोंग विद द गुड़ुची अब बैम्बू जब बॉईल हो रहा है अलोंग विद गुड़ुची व्हाट विल हैपन बैम्बू इज हैविंग एन अब्सॉर्बिंग पावर एंड आल्सो having an herbal property which can transform and absorb the process and properties of the herb into it एंड देन व्हेन अब बैम्बू उसके बाद में जब आपका प्रोसेस खत्म हो गया बैम्बू बिकम्स अ एक्सटर्नल मेडिकेशन फॉर यू एक्सटर्नल नॉट इंटरनल एक्सटर्नल मेडिकेशन फॉर यू अब उसके बाद में जैसे हम लोगों ने ग्लास कपिंग को फायर यूज करते हैं उसी प्रकार bamboo को fire use करके we apply it over the affected area. So that becomes one of the process of herbal cupping, how it is used in many of the Asian countries. And again, now let's understand how it is being used in the other countries like Western countries and also in many of the Gulf countries. Herbal cupping is been used in the form of काढ़ा itself and in Indian also use काढ़ा only okay जितना सारा काढ़ा होता है उसको क्या करते हैं जो कप है हमारा प्लास्टिक कप प्लास्टिक यानी तो कोरियन कप plastic cup do not use understand for the dry cupping process do not use the Chinese or disposable cups always you need to have a Korean cups to be used for dry cupping जो भी आप dry cupping पे इस्तेमाल कर रहे हो Korean cups वो Korean cups का 1/3 नीचे का फिल हो जाए 1/3 जब फिल हो जाए तो इमीडिएटली क्या करोगे आप प्लेस करोगे ओवर द अफेक्टेड एरिया जहां पे भी आप फॉर एग्जांपल नी है नी के ऊपर में प्लेस करके एक्सपोज कर दोगे बट अगेन अंडरस्टैंड द हर्बल शुड बी लूकवार्म द हर्बल शुड बी लूकवार्म द लूकवार्म होना चाहिए द लूकवार्म स्टेट में ही आप लोगों को 1/3 फिल करके यू हैव टू कीप इट ओवर द अफेक्टेड एरिया एंड कीप इट फॉर हाउ मच मिनट्स आई टोल्ड यू ऑल जितने भी सारे हॉट प्रोसेसेस हैं hot therapeutical situations in cupping therapy should be minimum 15 minutes 15 मिनट मिनिमम होना चाहिए मिनिमम तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए 30 30 minutes. मिनट्स गुड तो मिनिमम 15 मिनट से 30 मिनट तक होना चाहिए और इसी प्रकार आप जब करोगे यू विल सी अ वेरी इफेक्टिव रिजल्ट्स एंड यू विल सी ड्रेनेज प्रोसेस हैपनिंग circulatory system improving and of course because this can go if you manage it properly. You understand? So this is how we do it, and this is how we discuss on this. Any doubts on this, guys?
Any doubts in this? किसी को? Sir, you told that uh, varicose vein can be a causative factor for Hmm. this. Hmm. So, we have seen that massage cuppings works good in varicose vein. So, No, can but we again, do? we need to see that varicose vein only grade 1 can work, only which is a post-delivery very recently occurred, only for those massage cupping will work. But usually for varicose vein, contradictory why we are telling is it is very painful process during over the varicose vein for the for the above grade 2, grade 3, grade 4. We cannot do massage cupping for varicose vein. I'm not talking about the thrombus. I'm asking about the spider. Spider Because we. also, the spider occurs maybe between stage 1 and 2. Mhm. समझ रहे हैं ना? Okay. So Okay. Yeah. between Yeah. Got it. stage 1 and 2 also, if it is occurs also, many of the situation whenever it becomes very sensitive and prominency is not recommended for massage cupping. Yeah. Got प्रोमिनेंसी जहां पे हो गया, नॉट रिकमेंडेड फॉर मसाज कपिंग, क्योंकि वेन्स के ऊपर मसाज करने में पेनफुल प्रोसेस होता है. it. So Okay. So got better it. not to be done. Okay, so that's the reason we apply the other various processes. We have other process which can do good. See, massage is good wherever musculoskeletal is involved. समझ में आ रहा ना? मस्कुलस्केलेटल इन्वॉल्व, डाइजेस्टिव इन्वॉल्व, जहाँ पे मैनिपुलेशन करना है वहां पे वैसे स्ट्रक्चर्स में आप बिल्कुल मसाज कपिंग करेंगे. बट जहाँ पे जरूरत नहीं है, जहाँ पे यू कैन ब्रिंग द अदर रिजल्ट्स इफेक्टिवली ओवर दैट, go ahead and do it. Understand? So these are certain things which Yes. can manage it very effectively. Clear, guys? Clear, Yes. everyone? Sir. Chalo, it was so hope everybody found it you know informative, and hope that we bring next how many gap between the sessions, that I cannot tell. All depends on your line of treatment and the patient's approach towards the approach towards the treatment. See, अब वो नहीं बता सकते कि कितने दिनों में करना चाहिए, कितने सेशन करना चाहिए. All that is a call by the therapists and the doctors, क्योंकि some people stay very fast, some people stay nearby. All that, everything you need to think from each and every perspective and understand, and then plan the line of treatment. So everything, those things I cannot be telling, so sorry. But again, yes, of course, you need to go for certain session, then only it will give good results. But for me, see, for example, for me, in 4 to 5 session, it has given me results. So again, you need to plan across accordingly. Okay, so this is how it is. Clear? And probably again I have 2 to 4 more cases. Maybe in the next week we will discuss about some of the calcaneal spur, how to how we can manage calcaneal spur. Maybe one of the recent case which we did it was the cervical cervical spondylosis with a protruding herniation. Okay, herniated disc also in the cervical area, and also one of the also case with the and both, even lumbar bulging was also, the disc bulging was also there in the lumbar area. So that also we will discuss in the next class. Okay, so I have 3 4 so everyone also share with your your patient cases, so we can talk on that. हम लोग बात कर सकते हैं उन पे और डिस्कस भी कर सकते हैं कि कैसे मैनेज कर सके. Then only our learning, knowledge, everything gets improved, and so we all keep learning, and and become expertise in this. Correct, you know? And uh, yes, any doubts before we wind up today? Sir, I have got a doubt, sir. Mhm. Sir, sir, hello? Yes, tell me. Can you hear me, sir? I can hear you, bilkul. Yeah, Yes. so when we apply the cup over the cyst uh, for wet cupping, uh, okay, when we give incision, any chances of rupturing the cyst? no. The way we have taught you with regards to the depth and the length, if you manage it properly, of course you will not reach the cyst. Okay, Okay, sir. and Yes, sir. again we cannot assure. If you're going deeper, it is all left to the mistake of the practitioner. Yes, sir.
Hmm? Understand? Huh. Yes, Because sir. Thank obviously you, sir. the way whatever has been taught to you in the workshops, sessions, and each and everything, जहाँ पे भी बताया गया है, you all have to Hmm. maintain the depth and the length, of course. Those has to be a Yes, standard sir. protocols. Yes, sir. Thank you, sir. Hmm. Okay. Yes. Any others have other doubts? Okay. Fine, guys. So before winding up, I would like to inform you all that um, as we all know that we during our annual function we have launched the students dashboard. Okay, so student dashboard वो होता है जहाँ पे everyone are being also given an access. Every students, every one of our ICA members, and also taking it from the CTA workshop, जितने भी सारे हमारे students हैं, everyone have been given an access to make an account and give you all your informations over there so that you can get into the students dashboard. Okay, now since now our staff may be calling all of you all and some people so that you can register and become a member who has not become a member, and those people who have whose membership has been expired, they can also renew it accordingly but by giving the current information. So maybe our staff may get in touch with you all. Okay, so get into that so that you are all have your account, and also you can get into the student dashboard and you can download your membership ID cards from there itself. And that is a start we have made it, where you can apply for the courses, you can apply for the certificates, you can apply for uh, trainings and all. But again, since this is just a start, we still have a little longer vision on the students portal. We are still upcoming with many other things where our newsletters, magazines, and other things will still start up coming over there, so that everyone can have even blogs we can start up over there. So the first phase what we have come across with this portal is the membership download, applying for the course and updates. Okay, so these three things you will all will see, आप लोग सारा चीज देख पाओगे, तो इसका एक छोटा सा I'll share you now so that everyone go with that and do it and register yourself. Example, I'm just opening the internet. Okay, wait, let me just. So now I'll share with all of you all, just a second. So what you guys need to do is you need to get into this website. आप सब लोग ये website में जाओगे. Okay, so याद रखें, आप लोगों के पास सब लोगों को एक मेंबरशिप कार्ड दिया होगा ना? सब लोगों को मेंबरशिप कार्ड दिया हुआ है ना? सब लोगों के पास Yes. मेंबरशिप कार्ड के नीचे में आप लोगों का एक यूनिक आईडी नंबर है. So that is your identity now. So what you need to do now is, आप लोग क्या करना है, icaworld.in, याद रख लें सब लोग, icaworld.in पे आप लोगों को जाना है. पहले आप icaworld.in पे जाकर रजिस्टर करना है आपको पहले. ठीक है, रजिस्टर जैसे क्लिक करेंगे आप लोग, यहाँ पे दो चीजें बताएंगे, एक आके एग्जिस्टिंग मेंबर और अ न्यू मेंबर. याद रखें, अगर आप न्यू मेंबर है तो सिंपल आप इंफॉर्मेशन देके न्यू मेंबर बनेंगे, एग्जिस्टिंग मेंबर है तो सिंपल इट विल आस्क यू फॉर योर इंफॉर्मेशंस. अब पहले क्या पूछेगा वो, व्हाट इज योर एग्जिस्टिंग. इट इज नॉट आईसीसीए, इट इज आईसीए. यार आईसीसीए कहाँ से आ जाता है शहर. हाँ, हाँ, yes, log in into icaworld.in. Okay, so now coming to membership number. Okay, membership number is, जो भी आपका membership number हुआ है आपको दिया गया है. मुस्कान शेख, कौन सी बैच में थे आप मैम? कौन सी बैच में थे आप? आपको मेंबरशिप कार्ड नहीं मिला है? आप एक काम करें, जिन uh, if you don't have membership, then you need to contact our staff and or Shaista ma'am and just check and just check with your
IDs either तो to the लास्ट में जो अहमदाबाद में हुई था ना वो वाले कोर्स में तो हम लोग पर सर ने अच्छा ऐसा बोला कि अभी जो लास्ट में कोर्स होगा ना बैंगलोर में उसके बाद आपका सर्टिफिकेट और मेंबरशिप कार्ड अच्छा ठीक आएगा। अच्छा जिन जिन अच्छा अब रीसेंट बैच है ना, रीसेंट बैच को तुम दे देंगे हम लोग मैम। ओके, तो आप लोगों का शायद सर्टिफिकेट और मेंबरशिप कार्ड बचा हुआ है, तो वी विल सेंड दैट, तो आप उसमें मिल जाएगा। ओके, तो जिस दिन को नहीं मिला, अब अभी देखिए जिन जिन का अपार्ट फ्रॉम दी वर्कशॉप जिन जिन लोगों का नहीं मिला है, तो आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोगों को और जो जितने भी सारे सीटी किया है लोगों ने, उन उन लोगों को भी आप लोग चेक करना पड़ेगा कि वेदर आपका मेंबरशिप कार्ड आप लोगों को दिया हुआ है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको मेंबरशिप कार्ड लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ होता है जहाँ पे आप लोगों का मेंबरशिप नंबर पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि मेंबरशिप नंबर कैसे होता है। तो आप क्या करो, जस्ट वेट, तो यहाँ पे आप आइए यहाँ पे और अपना मेंबरशिप नंबर डालें। फॉर एग्जांपल आपका मेंबरशिप 91 ओके 192014, एक एग्जांपल एक स्टूडेंट का मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेरीफाई करेगा, ये चेक करेगा कि हाँ वेरीफाई है एग्जांपल, वेरीफाई करके अपडेट और रेन्यू करेगा। अगर आपका उसका अपडेट अपडेट नहीं हुआ है तो अपडेट करेगा, रेन्यू करेगा। रेन्यू करने के बाद में तो वहाँ पे डिटेल्स पूछेगा, डिटेल्स पूछने के बाद में देन इट विल आस्क यू फॉर द रेन्यूअल। अगर आपका रेन्यूअल है तो वहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स नहीं पेमेंट पूछेगा। तो मे बी यू नो दैट रेन्यूअल पेमेंट डिटेल्स मे बी समवेयर अराउंड 900 और समथिंग, आई डोंट नो। एक बार आप चेक कर लेना। तो वो एक बार वो पूछने के बाद में देन इट विल टेक यू विद द रजिस्ट्रेशन। उसके बाद होने के बाद में रजिस्टर होने के बाद में आपका फोटो सारा चीज आप लोग यहाँ पे फिल करने के बाद में, ये सारा चीज फिल करने के बाद में आपका फोटो जरूर अपलोड करना और अपडेट करना। जैसे आप अपडेट कर देते हो देन यू गो इनटू द लॉगिन। लॉगिन को क्लिक करोगे, फिर लॉगिन में आपका डिटेल्स, फिर ईमेल एड्रेस जो आपने वहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया है वही एड्रेस डालना है, और जो पासवर्ड आप लोगों ने सेट किया उसको सेट करते हुए आप लॉगिन करोगे। फॉर एग्जांपल अभी आप just wait, I will just give you I'll give you one, I'm just sharing you one, इसका बताता हूँ कैसे लगता है ताकि you all can do it accordingly and you can download your membership as well. Okay, sir give me your ID क्या है तुम्हारा? सहारनसारे सहर है, SAHAR सहर, ANSAR ANSAR सहर अंसारी .NSA .LSA ना। हाँ इतना ही था at ना the ID rate of डॉट, हाँ ठीक है। Okay, password I know because I was just using, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा करने के बाद में यू विल गेट इनटू द डैशबोर्ड। ओके, आप ये डैशबोर्ड में आने के बाद में यू विल सी योर प्रोफाइल पिक्चर। आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं आपके प्रोफाइल पिक्चर, जो भी चाहिए आपका डिटेल्स वगैरह है सारा चीज आप लोग एडिट कर सकते हैं। ओके, तो सारा चीज एडिट कर भी सकते हैं। देन यू कैन गो बैक टू डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड होने के बाद में यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे डाउनलोड आईडी कार्ड, अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट, अप्लाई कोर्सेज कितने किए हैं, अपडेट्स, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये तो फर्स्ट फेज में है, तो इसलिए आपको अभी फिलहाल के लिए डाउनलोड आईडी कार्ड दिखाई देगा, अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट्स, अप्लाई फॉर कोर्सेज एंड कितने कोर्सेज किया है वो सारा का सारा चीज यहाँ पे दिखाई देगा। देन अगेन डाउनलोड आईडी कार्ड। अभी इसके बाद में आईडी कार्ड का टेंशन हट जाएगा। जितना भी सारा अभी आईडी कार्ड है यू कैन एवरीबडी कैन डू इट ओवर दी ऑनलाइन इटसेल्फ, और इसको लेके आप लोग खुद आपका आईडी कार्ड के जैसे इसको इस्तेमाल कर लोगे, जैसे कि मेंबरशिप आईडी नीचे ये है ऐसे दिखाई देगा सब लोगों को। क्लियर है, समझ में आ रहा है? और इसको डाउनलोड करके आप लोग आपका आईडी कार्ड बना सकते हैं। क्लियर है एवरीवन, अंडरस्टैंडिंग?
Understanding everyone? तो ये सारा का सारा चीज everyone appreciate everyone to log in over here and do with all the details. Clear? Any doubts? Any doubts, guys? So I appreciate every one of you all. Go ahead and whenever you find time, जब भी आपको टाइम मिले तो आप लोग जाकर पहले जिन जिन के नहीं है मेंबरशिप कार्ड, पहले क्या करो आप टीम से आप लोग get in touch with the team, and I'm just writing. You can just talk with Shaista on that. I'm just sending the number. 8986. Okay, you can get in touch with Shaista on the on your membership process. Whether अगर आपका नहीं है तो आप उनको फोन करके चेक कर लें क्यों नहीं है. She will tell you whether you have your membership has been done or not, क्योंकि now all the student data we have put on up in the dashboard. Okay, और dashboard will become a bigger portal now because you will be having with the blogs. ये सारा चीज अभी हम लोग zoom में करेंगे, फिर आगे हम लोग जाकर सिर्फ memberships को ही करेंगे. We will not open later with this who and all have become member. We will all do video calls, trainings, everything जितने भी सारे हैं वहीं पे ही आएंगे हम लोग. ठीक है, we'll slowly shift from the Zoom and get it into the students portal. So that is going to be a bigger vision and mission of our ICA, because many things are coming. I cannot tell you because that's a part of the government. Some of the government things are also coming, and we are getting attached with them as well with many of the courses and many of the things, inshallah. So we are still working with the ministry also to get attached with some of the ministry courses also over there. तो बहुत सारा चीज हम अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं, and then once it is on and our back end also working, so it is going to be a bigger thing. So just get into it and be a part of our member. Okay, this is what I can tell you as of now. Take care, guys. Take care. May Allah bless all of you all and Almighty bless all of you all. Okay, take care, guys. And also, yes, I'm getting, and also many wishes for the festive seasons. Okay, the festive season going on. Many wishes to all of you all, and also take care, guys, and may Almighty bless all of you all. Okay, take care. Bye bye. And any doubts before I wind up? Any doubts? Clear, everyone? Sir, Okay. Assalamu alaikum. Yes, Wal Islam. Yes, tell me. Sir, actually, I'm traveling. That's what I. Okay. Sir, what about the CTA course going to be start? Better. CTA course, the new 11th batch is going to start from tomorrow. Tomorrow, you sir, you will give a free demo class. Okay, yeah, regarding- demo class. You can take. I'll send you the link. Okay, I'll ask Okay. Shaista to send you the link. You can please join for tomorrow's demo class. No problem. What time, sir? Tomorrow? Tomorrow 11 to 12. In the noon. Morning 11 to 12. Oh. Could you please make it in the evening, sir? After 7 or something? Possible, na? Because all the students will be free by in the morning. Oh. However, it is online only. No, I think they can easily be able. Actually, most people are working. No, I am also working. So tomorrow is a working day. I don't know, but again, we have announced at 11 o'clock. But if you still think we can, if you tell us the timing, then again, probably I can see. Evening, nobody will join after 5. At least by 2 o'clock, it should be fine. But again, 2 o'clock, no one will come at 2 o'clock. Because 11, everybody finishes their work and they'll start up their work. 8 o'clock and all. 7, No, 8 people. o'clock, no, they will not attend. Okay. They will not attend, Shamirji. Morning, one day Okay. you try, na 11 o'clock. It's only one day itself, right? However, it's Okay, online. sir. Please share the link. I can share it in my group, no? Yeah, I'm sharing the link. I'll share the link and I will also ask others also to put it in the groups. Okay, so other people can also join the link and at least take get to know how the CTA course works, because many of the students still have not done CTA course. Even they can do the CTA course accordingly. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you.
Thank you very much. Thank you guys. Take care. Bye bye. Okay. Thank you. Let's meet up next week again. Bye bye.